Hello everyone, this is Dr. Shivangi Tiwari. I am MCH resident in reproductive medicine and surgery, and today we will discuss advances in the management of genital tuberculosis. So let's start. I'll be covering this topic under the headings of introduction, its presentation, what are the risk factors, its differential diagnosis, what are the diagnostic tests available, what is the medical management, surgical management, TB and pregnancy, and the take-home message. So, starting with the introduction, TB is a major public health problem, and globally around 10 million persons they develop active TB each year, and majority it affects in the age group of 20 to 40 years, which is the main reproductive age group. Female genital tuberculosis is the third most common extrapulmonary TB, and incidence is 1 to 19%. And if we talk about infertility, then infertility because of TB is around 5%. And in female genital TB is almost always secondary to elsewhere. Coming to the routes of spread, it can be spread via hematogenous route, that is through blood it can spread. Then second is it can spread via lymphatic route, or it can spread via direct sexual contact. Vertical transmission is rare. Coming to the pathogenesis, then in 95% of cases, it is caused by Mycobacterium tuberculosis. In rest 5% is caused by Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, or Microti. If we talk about what is the percentage-wise distribution on the basis of the area affected, then around 100% cases में 90 to 100% cases में fallopian tubes are affected. Then in 70% cases uterus is affected. Ovaries are affected in 30% cases. Cervix in 10% cases. While vagina and vulva are affected in 1% each. Genital TB is like a silent rise. Because symptoms, patient के जो symptoms हैं वो तब आते हैं जब significant organ damage has already occurred. So this is the problem. If we talk about what is the clinical presentation of female genital TB, तो यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं उनमें एक पर्सनल हिस्ट्री रहती है पल्मोनरी टीबी की या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री होती है टीबी की. इन 10% केसेस में कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं पेशेंट को. अगर सिम्टम्स होगा तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं वो इनफर्टिलिटी के साथ आती हैं फीमेल्स, दैट इज इधर प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. जनरल सिस्टमिक सिम्टम्स मिल सकते हैं जैसे कि पेशेंट कैन कम विद पैरेक्सिया, एनोरेक्सिया, वेट लॉस हो रहा है, मैलेज रहता है. मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि प्यूबर्टी, मेनोरेजिया, पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एमेनोरिया हो सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी. कभी कभी अर्ली सिम्टम्स में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है. लेट सिम्टम्स में ओलाइगोमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया हो जाता है. डिस्मेनोरिया रह सकता है. पेशेंट कैन कम विद एब्डोमिनल और pelvic mass, abdominal and pelvic pain, vaginal discharge हो सकता है, and even urinary incontinence हो सकती है. कमिंग टू द साइंस ऑन एग्जामिनेशन, तो हमें फीवर मिल सकता है, लिम्फेडेनोपैथी मिल सकती है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे कोई मास एब्डोमेन मिल सकता है विच कैन बी अ वेग और अ डेफिनेटिव मास, असाइटिस मिल सकती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोई फील ऑफ एब्डोमेन मिलता है. वजाइनल एग्जामिनेशन में अगर बायोमेट्रा है तो यूट्राइन एनलार्जमेंट मिलेगा, कोई ट्यूबो ओवेरियन मास मिल सकता है, एडनेक्सल मास मिल सकता है, इंड्यूरेशन एंड फुलनेस एंड टेंडरनेस इन द पीओडी इफ एनी मास इज देयर. नेक्स्ट, ये टीबी, जेनेटल टीबी कैसे इफेक्ट करता है जेनेटल ऑर्गन्स को. इफ वी टॉक अबाउट ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स, तो ट्यूब्स में एडेजेंस हो सकता है, पेरिट्यूबल एडेजेंस बन सकते हैं, ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है, हाइड्रोसेल्पिंग्स हो सकती है, दे कैन कॉज इनफर्टिलिटी. नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम में एडेजेंस डेवलप हो सकते हैं, तो इंट्रायूटेराइन एडेजेंस बन सकते हैं. कैविटी कैसे हो जाती है, ट्यूबुलर कैविटी हो जाती है. एशरमैन सिंड्रोम सेम थिंग, एडेजेंस बन जाते हैं विद सिम्टम्स होने लगते हैं. डिक्रीज्ड सब एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो हो जाते हैं, इम्प्लांटेशन फेलियर्स होने लगते हैं. ओवरी में ये टीबी जो है ओवरी को डैमेज करके ओवेरियन रिजर्व कम कर देते हैं. So FGTB infection है, it alter the endometrial milieu, and if endometrial milieu is disturbed, obviously it is going to affect the uterine receptivity. Why? Doing the immune modulation via endocrine disruption, activation of the apla antibodies, and microthrombosis that leads to recurrent implantation failure and infertility. What are the risk factors? अगर कोई पेशेंट है उसका इंटरेक्शन हुआ है विद अ पल्मोनरी टीबी पेशेंट विद अ पॉजिटिव स्मीयर टेस्ट, या कोई पास हिस्ट्री है टीबी की, फ्रेश ट्रैवल हुआ टू द एंडेमिक रीजन, जैसे हमारा इंडिया है, इट इज वेरी एंडेमिक रीजन फॉर टीबी, तो कोई बाहर का पेशेंट आया है वो इंडिया में आ गया,
पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, रिसाइडिंग इन अ पॉपुलेशन दैट इज HIV एंड ड्रग अब्यूजर्स, HIV के पेशेंट में इम्यूनिटी कम होती है तो TB यू कैन फाइंड। देन माल न्यूट्रिशन है, ओवर माल न्यूट्रिशन की वजह से ओवर क्राउडेड एरियाज हैं तो कॉन्टेक्ट ज्यादा होते हैं। देन डायबिटीज मेलाइटस है, इसमें ऑब्वियसली बॉडीज इम्यून कॉम्प्रोमाइज। देन स्मोकिंग कैन आल्सो इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग TB। देन व्हेन टू सस्पेक्ट जेनाइटल टीबी, तो हमें ऐसे क्या लगेगा कि हम सस्पेक्ट करें कि जेनाइटल टीबी हो सकती है। तो पेशेंट आई है विद लॉन्ग लास्टिंग PID एंड इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। पेशेंट को बहुत टाइम से लोअर एब्डोमिनल पेन है, वजाइनल डिस्चार्ज है, आपने PID के सिम्टम्स हैं, आपने उसको ट्रीट किया, एंटीबायोटिक दी, बट उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी, नहीं समझ में आ रहा है क्यों इनफर्टिलिटी है। इरेगुलर साइकिल्स हैं और ब्लीडिंग है आफ्टर मेनोपॉज। कांस्टेंट डिस्चार्ज हो रहा है वजाइना से, wherein genital malignancy has been eliminated. So if we talk about differential diagnosis, अगर पेशेंट को tuberculous salpingitis है, then RDD can be PID, ectopic pregnancy, ovarian cyst, endometriosis, CA colon, and diverticulitis. Endometrial TB, DD can be DUB or endometrial carcinoma. Ovarian TB can mimic ovarian malignancy. Cervical TB can mimic CA cervix. Vulval TB can mimic elephantiasis vulva. Now, coming to the diagnostic challenges. प्रॉब्लम क्या है टीबी को डायग्नोज करने में? द लैक ऑफ डायग्नोस्टिक मेजर, बिकॉज जो हमारे पास कन्वेंशनल माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हैं, दे नीड हाई बैक्टीरियल लोड टू कम पॉजिटिव। प्रॉब्लम विद द माइक्रोबैक्टीरियम टीबी इज इट इज पॉसिबैसिलरी, राइट? पॉसिबैसिलरी होता है, उसके नंबर्स कम होते हैं, दैट इज। एंड फॉर द कन्वेंशनल माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट टू कम पॉजिटिव दे नीड हाई बैक्टीरियल लोड, सो दिस इज द प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग इज वी डोंट हैव एन एप्रोप्रिएट क्लिनिकल सैंपल फॉर FGTB। अगर पल्मोनरी टीबी है तो हमारे पास सैंपल इजीली मिल जाता है, बट अगर जेनेटल टीबी है, सपोज एंडोमेट्रियल टीबी है, दैट इज इन्वॉल्व इन 70% केसेस, तो हम एक एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेते हैं, बट एंडोमेट्रियल बायोप्सी हम हर जगह से तो नहीं ले सकते हैं, तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी कैन मिस द एरिया ऑफ इन्फेक्शन। बाय वन रीजन इज, क्या होता है कि मंथली शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की, सपोज ऊपर ही था, वो जो लेयर है वो शेड हो गई एंडोमेट्रियम की, तो हम मिस कर सकते हैं माइक्रोबैक्टीरियम टीबी। अगर फेलोपियन ट्यूब से इन्वॉल्व इन 100%, 90 to 100% केसेस, उसको कैसे बायोप्सी लें? नहीं ले सकते। ओवरीज है, उसकी बायोप्सी नहीं ले सकते, ऐसे केसेस पे हम जेनेटल टीबी मिस कर देते हैं। अब डायग्नोसिस ऑफ FGTB कैसे होती है? फर्स्टली, कोई भी चीज की डायग्नोसिस कैसे बनती है? केयरफुल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। तो केयरफुल एंड डिटेल हिस्ट्री लेनी है कि कोई पास्ट टीबी तो नहीं हुई है, स्पेशली पल्मोनरी टीबी तो नहीं हुई है, इवन बचपन में भी हुई है, चाइल्डहुड में भी हुई है, देन आल्सो वी हैव टू थिंक ऑफ फैमिली हिस्ट्री है टीबी की, कोई पास्ट हिस्ट्री है ट्रीटमेंट का, कोई हिस्ट्री ऑफ अदर क्रॉनिक डिजीज और कंडीशन जिसकी वजह से पुअर इम्यूनिटी हो, जैसे कि HIV तो नहीं है पेशेंट को, कोई इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट पे तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है पेशेंट को, दैट वी हैव टू थिंक ऑफ। Then we have to send some investigation in that hematological test means complete hemogram। उसमें टीबी के साथ क्या होता है? टीबी इज एसोसिएटेड विद अनीमिया, इन्फेक्शन है तो TSC काउंट्स रेज्ड होंगे, लिम्फोसाइटोसिस होगी, ESR करेंगे तो ESR रेज्ड होगा क्योंकि इन्फेक्शन है। देन को इन्फेक्शन टेस्टिंग, HIV, HBsAg, HIV के साथ इम्यूनोसप्रेशन के साथ एसोसिएटेड हो सकता है तो को इन्फेक्शन टेस्टिंग करानी है। देन डायबिटीज को रूल आउट करने के लिए ब्लड शुगर फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेंडियल करानी है, RFT करानी है कि कोई CKD क्रोनिक किडनी डिजीज तो नहीं है। देन देयर आर सम टेस्ट लाइक Monto's test दैट इज ट्यूबरकुलिन टेस्ट। अब तो एक्चुअली कोई भी नहीं करता है, बट बहुत पुराना टेस्ट है Monto's टेस्ट। इसमें क्या होता है कि वैल्यू अगर मोर देन 10 mm है तो थोड़ा सा क्लू देता है, बट इट इज नॉट रिलायबल। its sensitivity is very poor 55%, the specificity of 80%। if it is positive, अगर मोर देन 10 mm आ रहा है, पॉजिटिव टेस्ट है, तो यस इंडिकेट करेगा कि इन्फेक्शन है, बट डिजीज है कि नहीं दैट इट कांट टेल। बट अगर नेगेटिव है टेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज ब्लड मार्कर्स। तो कुछ लोग बोलते हैं CA-125 कराने चाहिए, बट इट इज ओनली मॉडरेटली रेज्ड, दैट इज लेस देन 200 रहता है FGTB के केसेस में, कंपेयर टू हायर राइज इन थाउजेंड्स इन कैंसर ओवरी। बट लेस देन 200 का वैल्यू जो CA-125 का रेज होता है वो किसी इन्फेक्शन या वैसे भी केसेस में रेज हो सकता है, सो इट इज नॉट अ वेरी रिलायबल मार्कर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ FGTB। कमिंग टू द एक्सरे चेस्ट, एक्सरे चेस्ट PA व्यू जो हम कराते हैं उसमें क्या है कि आपको अगर पल्मोनरी टीबी है तो वो पता चलेगी, तो इट मे शो एन
Active pulmonary TB like fibrocavitary disease and infiltration, mediastinal और hilar lymphadenopathy है, miliary TB है, या old heal lesions of past TB है. तो कोई past TB तो नहीं है, pulmonary TB तो नहीं है, active TB तो नहीं है, active pulmonary TB वो बता सकते हैं. Genital TB के बारे में ये भी नहीं बता पाएगा. Then we have IGRA, that is interferon gamma release assay. ये क्या करता है? It measures the body's immune response to the bacteria that causes TB. तो जो बैक्टीरिया ने टीबी कराया उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने जो इम्यून रिस्पॉन्स दिया उसको इट मेजर्स, दैट इज इग्रा, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एस्से. सो इट डिटेक्ट, प्रॉब्लम विद इट इज इट डिटेक्ट लेटेंट टीबी इन्फेक्शन. इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश एक्टिव फ्रॉम द ट्रीटेड टीबी. अगर कोई पेशेंट टीबी ट्रीट हो चुकी है देन आल्सो इग्रा कैन कम पॉजिटिव. लेटेंट टीबी है, पेशेंट को कोई एक्टिव टीबी नहीं है, देन इट कैन नॉट डिफरेंशिएट. एंड यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है क्वांटिफेरॉन टीबी, गोल्ड प्लस, टी स्पॉट, टीबी टेस्ट, that is T spot. ये सब IGRA की टेस्ट है. What are the steps of IGRA? First is हमें blood collection करना है, that is we have to collect a blood sample from the individual. It is an MTB infected individual suspected. Then क्या होता है कि जो T cells होते हैं, जो T माइकोबैक्टीरियम है, जो TB है, माइकोबैक्टीरियम TB है, उसके कुछ स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं. तो इसकी उसको उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी है वो टी सेल्स को एक्टिवेट करती है, जो कि इंटरफेरॉन गामा रिलीज कराती है एंटीजन कोटेड ट्यूब. फिर हम जो इंटरफेरॉन गामा है उनको मेजर करते हैं यूजिंग द एलाइजा टेस्ट. So its interpretation can be, it can come as positive, it can come as negative, it can come as borderline or intermediate, sorry, indeterminate. Negative IGRA result means unlikely the patient is TB. अगर IGRA is negative, that means patient को TB नहीं है. But if it is positive, then whether the patient is infected in the past or it is an active TB, we don't know. So limitations is it can produce false negatives and false positive results. Next is endometrial aspirate or sampling. So हम क्या कर सकते हैं? हम EB biopsy ले सकते हैं. So it is usually done in the premenstrual phase, that is day 21 to 24 of regular cycle. Why we should do it in the premenstrual phases? क्योंकि अगर menses के बाद अगर हम करते हैं जो तो जो endometrial layer है वो shed हो जाएगी and we can miss TB cases. So it should be done in premenstrual phase, that is between day 21 to 24 of the regular cycle. It is done with number 4 Karman's cannula or pipple or with EB curette से we can do. जो हम EB करना तो हमें क्या करना है? हमें उसको जो सैंपल हमें मिलेगा हमें उसको 2 पोर्शंस में करना है. एक पोर्शन में हमें नॉर्मल सलाइन डालना है, एक पोर्शन में हमें फॉर्मेलिन डालना है. तो हम 2 वाइल रेडी रखेंगे. जो हमने EB का सैंपल लिया, एक वाइल में हमने नॉर्मल सलाइन डाल के रखा है, दूसरे वाइल में हमने फॉर्मेलिन डाल के रखा है. तो जिसमें हमने नॉर्मल सलाइन डाल के रखा है उसको हम भेज देंगे AFB स्टेनिंग के लिए, AFB कल्चर के लिए, जीन एक्सपर्ट के लिए एंड PCR के लिए. जबकि जो हमने सेकंड वाला जिसमें फॉर्मेलिन रखा हुआ है वो हम भेजेंगे हिस्टोपैथोलॉजी के लिए. Now, what is AFB microscopy? AFB microscopy में हम क्या करते हैं? We can do Zn staining. जब हम Zn staining, that is Zeal Nelson staining करते हैं तो उसमें जो एसिड फास्ट बेसिला है ये पिंक कलर के like this is Zn staining. तो उसमें जो माइकोबैक्टीरियम TB जो एसिड फास्ट बेसिला होते हैं ये पिंक कलर के लॉन्ग स्लेंडर बेसिला की तरह दिखते हैं with their beaded appearance. Then we have auramine and rhodamine fluorescent dyes that with LED microscopy. So जो mycobacterium species जो होती हैं they fluoresces yellow against the dark background. So this Zn staining and this AFB microscopy, it is very simple, rapid, with the highest sensitivity test. But the problem is it requires a high bacterial load. So it requires 10,000 mycobacteria per ml for the smear to be set positive. Negative smear does not rule out GTB. And problem is mycobacterium is possibly. Next is they can go for mycobacterial culture. Gold standard for diagnosis of tuberculosis is doing a mycobacterial culture. It is useful for our drug sensitivity testing with various media. तो बैक्टीरियल कल्चर के साथ साथ हम ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी कर सकते हैं with various media. We have different types of mycobacterial culture. One is traditional egg-based solid media, that is Lowenstein-Jensen LJ medium, and agar-based 7H10 or 7H11 broth. Its sensitivity is very low, 30 to 40%, and it takes up to 6 weeks to go mycobacterium TB.
आप इस टाइम में जहाँ सब कुछ फास्ट फास्ट चाहिए, किसके पास इतना 6 वीक्स का टाइम है कि वो वेट करेगा कि यार कल्चर आएगा तब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे? 6 वीक्स तो कोई वेट नहीं करेगा, राइट? देन वी हैव बैकटिक। बैकटिक 460 radiometric culture system. It gives the diagnosis in just 1 to 2 weeks, and sensitivity is also very good, 80 to 90%. This we can do. Then we have Bactec MGIT, that is Mycobacterium Growth Indicator Tube 960 system. It is non-radioactive, non-invasive, and fluorescent fluorometric culture system which use Middlebrook 7H9 growth and fluorescent compound in a silicon sensor, and it gives diagnosis in just 1 to 2 weeks. That is also very good. Then we have VersaTrack. VersaTrack is a US FDA approved liquid based culture for Mycobacterium TB with much higher detection rate of FGTB in up to 46.7% cases. Uses but it uses special MISO bottle for the VersaTrack. Its advantages are high sensitivity, high specificity, but its limitations are it requires longer time. It is weeks for the results with delay in the treatment. इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि कोई लेके वेट कर रहा है. We want fast results, right? देन थर्ड थिंग जो हमने बोला था कि हम फॉर्मलिन भेजेंगे, दैट इज हिस्टोपैथोलॉजी. हिस्टोपैथोलॉजी हम करा सकते हैं, उसमें हमें एपिथेलियल ग्रैनुलोमा मिल सकता है. तो डिटेक्शन ऑफ एपिथेलियल ग्रैनुलोमा और ग्रैनुलोमेटस डिजीज ऑन एचपी विद ऑलमोस्ट 100% सेंसिटिविटी. कि 100 अगर हमें एपिथेलियल ग्रैनुलोमा मिल रहा है या ग्रैनुलोमेटस डिजीज मिल रही है हिस्टोपैथोलॉजी, दैट मींस इट्स 100% सेंसिटिव बट वेरी लो सेंसिटिविटी. ग्रैनुलोमा क्या होता है, टेक्स अराउंड 3 weeks टू डेवलप एंड मंथली शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम. तो ग्रैनुलोमा मिलना बहुत मुश्किल है. अगर हमने प्री मेंस्ट्रुअल किया तो चांसेस है, अदरवाइज मंथली शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम के साथ ग्रैनुलोमा जा सकता है. एंड नेगेटिव एचपी डज नॉट रूल आउट जीटीबी. सो इफ वी कंबाइन थ्री, हम एफजीटीबी डायग्नोस कर रहे हैं. अगर हमने तीनों चीज कंबाइन कर दी, हमने माइक्रोस्कोपी भी के लिए भी भेज दिया, कल्चर भी करा लिया, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भी करा लिया, एंड if it come and if positive, then it gives a definitive diagnosis of TB. But problem is ये तीनों मिलके मिस कर सकते हैं 70% ऑफ केसेस. कितना बड़ा बात है. ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम डेफिनेटिव कि हाँ माइक्रोस्कोपी कल्चर हिस्टोपैथोलॉजी ये पॉजिटिव है, मतलब हम श्योर है कि यार टीबी है. बट अगर ये नेगेटिव है तो हम श्योर नहीं है कि टीबी है कि नहीं है. मतलब चांसेस है कि टीबी हो सकता है, क्योंकि ये अराउंड 70% ऑफ केसेस मिस कर सकते हैं. व्हाट नेक्स्ट? क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट? हम सीबी नेट भेज सकते हैं. इन तीनों के साथ साथ हमें सीबी नेट भेजना है. व्हाट इज सीबी नेट? सीबी नेट इज कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट. इसको सीबी नेट को जीन एक्सपर्ट भी बोलते हैं एंड इट इज अप्रूव्ड बाय डब्ल्यूएचओ. इट डिटेक्ट्स द डीएनए ऑफ माइकोबैक्टीरियम टीबी एंड अलोंग विद दैट ये रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है कि नहीं ये भी बता देते. It extracts Mycobacterium TB DNA, it amplifies it, and identifies the targeted nucleic acid sequences. It uses hemi-nested real-time PCR to magnify Mycobacterium TB. ये जो है बहुत कम, अगर माइक्रोबैक्टीरियम टीबी लोड है तो भी डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टीबी के साथ प्रॉब्लम ही यही है, पॉसिबैसिलरी है. तो अगर 130 it can detect as low as 133 colony forming units per ml of specimen. इसलिए टीबी की डायग्नोसिस में बहुत हेल्पफुल है. ये रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है कि नहीं वो बता सकता है विद इन 2 hours. वेरी यूजफुल. Sensitivity is low, 30%, but yes, specificity is almost 100% in FGTB patients. Its advantages are obviously it is faster than culture based systems. Culture को तो 1-2 हफ्ते मिनिमम लगता है आने में. इसको कोई हाईली ट्रेन पर्सनल नहीं चाहिए. इट कैन बी यूज क्लोज टू द पॉइंट ऑफ केयर. जल्दी से भेज सकते हैं, जल्दी से रिपोर्ट आ जाती है. बट दिस डिसएडवांटेजेस आर लो सेंसिटिविटी, ओनली 30% सेंसिटिविटी है. कॉस्ट, हायर कॉस्ट है. नेगेटिव रिपोर्ट, कभी कभी क्या होता है ब्लड कंटामिनेशन, इसकी वजह से नेगेटिव रिपोर्ट आ सकती है. लो डिटेक्शन रेट इन जेनेटल टीबी. प्रॉब्लम क्या होती है कि सीबी नेट जो है पल्मोनरी टीबी के लिए अच्छा है, बट जेनेटल टीबी के लिए इसका लो डिटेक्शन रेट है. व्हाई? बिकॉज हमें क्या करना होता है, हमें एंडोमेट्रियम सैंपल देते हैं ना, तो एंडोमेट्रियम को इन लोग को लाइज करना पड़ता है टू एक्सट्रैक्ट द ट्यूबरकल वेसिल फ्रॉम द एंडोमेट्रियम कंपेयर टू स्पूटम सैंपल. स्पूटम सैंपल में डायरेक्ट मिल जाता है, बट एंडोमेट्रियम को लाइज करेंगे तब एक्सट्रैक्ट करेंगे ट्यूबरकल वेसिल को, तो उसकी वजह से लो डिटेक्शन रेट रहता है इन जेनेटल टीबी. नेक्स्ट वी हैव पीसीआर.
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो उसमें है नेट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, that can identify nucleic acid sequences of Mycobacterium tuberculosis in tissue samples. गुड थिंग, इसकी सेंसिटिविटी भी अच्छी है, स्पेसिफिसिटी भी अच्छी है। सेंसिटिविटी ऑफ 9 मोर देन 90%, स्पेसिफिसिटी ऑफ 95%। एडवांटेज, इट कैन डिटेक्ट लेस देन 10 बेसिलाई पर ml, 1 ml में 10 बेसिलाई से कम भी होगा तो भी पीसीआर डिटेक्ट कर लेगा, एंड इट गिव्स रिजल्ट्स इन जस्ट 1 to 2 days, तो ऑब्वियसली पीसीआर इज बेस्ट। बट हर चीज का डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, अलोन इट इज नॉट इनफ टू कंफर्म अ डायग्नोसिस और स्टार्ट अ ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि पीसीआर पॉजिटिव आ गई तो यू कैन स्टार्ट अ ट्रीटमेंट, नो। Why? Because it cannot differentiate between a live and dead bacteria. ये तो बता देगा कि यार ये आपके जो सैंपल है उसमें टीबी बैक्टीरिया है, और वो टीबी बैक्टीरिया लाइव है, डेड है, तो उसने तो ये नहीं बताया कि वो लाइव है या डेड है, उसने बस ये बताया माइक्रोबैक्टीरियम टीबी है। अब डेड बैक्टीरिया उसने डिटेक्ट कर लिया, क्या फायदा? So it, and the third problem is it may remain positive during ATT और after completion of therapy के बाद भी ये positive आ सकता है। There are multiplex PCR that use multi-gene or multi-primer PCR that have higher sensitivity. So in clinical practice, PCR is not used to diagnose FGTB or to start ATT, but it is used as a method to investigate further for FGTB. तो जैसे help कर देगा, it's like a helping hand. Next comes what can be the imaging method. फर्स्ट इज अल्ट्रासाउंड। एंडोमेट्रियम की बात करें तो अगर पेशेंट को एफजीटीबी होगा तो एंडोमेट्रियम में बहुत ही थिन एंडोमेट्रियम मिलेगी, थोड़ी सी हेट्रोजेनस अपीयरेंस रहती है एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम में फ्लूइड मिल सकता है, कैल्सिफिकेशन हो सकता है, बैंड्स हो सकते हैं, इंट्रायूटेराइन साइनिकीज और एडहेशंस एशरमैन सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट कर सकता है। फेलोपियन ट्यूब्स में हाइड्रोसल्फिंग्स मिल सकती है विद दिस इनकम्प्लीट सेप्टा, कॉगवीन साइन मिल सकता है। Then ovaries में inhomogeneous enlargement of ovary with free peritoneal fluid and the adnexal masses में। Then is HSG. HSG obviously it is contraindicated, टीबी में कभी एडवाइस नहीं है, but अगर बाई चांस हमने किसी और इंडिकेशन की वजह से HSG किया था, उसमें हमें HSG के HSG पे फीचर्स मिल सकते हैं टीबी के। What can be these features? एंडोमेट्रियम में अगर एक्यूट टीबी हुआ तो वीनस एंड लिम्फेटिक इंट्राविजेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। क्रोनिक में इंडेंटेड एडिशंस वाली मिलेंगे, दैट इज फिलिंग डिफेक्ट्स, कैविटी यूट्राइन कैविटी रिड्यूस हो जाएगी, डिस्टॉर्शन हो जाता है उसका शेप का, इट कैन बी अ टी शेपेड और स्मॉल श्रिवल्ड, कंप्लीट यूट्राइन कैविटी का ऑब्लिटरेशन हो सकता है। फेलोपियन ट्यूब्स में बीडेड अपीयरेंस, टोबैको पाउच, गोल्फ क्लब, मल्टी क्रॉस, रिजिड पाइपलाइन, ट्यूबल डायलेटेशन, फिलिंग डिफेक्ट्स, ये सब ऐसा। सर्विक्स में स्टेनोस सर्वाइकल कनाल, इरेगुलर कॉन्टूर ऑफ द सर्विक्स मिल सकता है। एंड ये मैं बता ही चुकी हूँ, HSG is obviously it is contraindicated even in the suspected or the proved cases of FGTB. बाई चांस किसी अगर इंडिकेशन, किसी इनफर्टिलिटी के इंडिकेशन से किया था, पेशेंट का आपको ट्यूबल पेटेंसी करना था, उसमें आपको टीबी के मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे देखते हैं। बट अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो टीबी, प्रूवन केस है, HSG is contraindicated. So this HSG picture, see, it is showing the rosette-like appearance of the fallopian tube. It is showing the beaded tube appearance. It is showing the gold club tube. It is showing the pipe stem appearance. And this is the floral appearance. This is showing the leopard skin appearance that are the characteristic of FGTB. Next is hysteroscopy. Hysteroscopy is often done concomitantly with laparoscopy for better results. So कभी भी टीबी के लिए hysteroscopy करते हैं तो म्यूचुअली विद laparoscopy करते हैं। FGTB में hysteroscopy में क्या मिलते हैं? पेल एंडोमेट्रियम मिल सकती है, ट्यूबरकल्स, केशियस नोड्यूल्स मिल सकते हैं, क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस के फीचर्स, इडेमा, माइक्रोपॉलिप्स, varying grades of inter-uterine adhesions, distorted and shrunken uterine cavity with obliterated ostia मिल सकता है। इट हैज हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड डिफिकल्टीज जब हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल श्रंकन कैविटी रहती है। एक जो प्रोसीजर है वो एक एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंटरनल एडिशन से तो आपको एंट्री मुश्किल पड़ेगी और प्रेफरेबली अंडर लैप्रोस्कोपिक गाइडेंस करना है। इफ यू टॉक अबाउट लैप्रोस्कोपी, व्हेन अदर लेस इन्वेसिव टेस्ट जो है दे आर इनकंक्लूसिव और आप मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर रहे हो तो यू हैव टू डू द लैप्रोस्कोपी।
एडवांटेजेस क्या है कि आप पेल्विक ऑर्गन विजुअलाइजेशन कर सकते हो, स्पेसिमेन ले सकते हो इनएक्सेसिबल साइट से, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह से भी आप स्पेसिमेन ले सकते हो। तो जब भी आप लेप्रोस्कोपी करोगे तो स्पेसिमेन शुड बी सब्जेक्ट टू, स्पेसिमेन जो है हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजना है, जो कि सैंपल फॉर्मेलिन में जाएगा, WHO अप्रूव्ड नैट दैट इज जीन एक्सपर्ट के लिए, माइक्रोस्कोपी के लिए, टीबी कल्चर के लिए, these all samples should be sent in saline that I have already discussed. What can be the laparoscopic findings? Definitive findings are tubercles मिल सकते हैं, caseations, videate tubes मिल सकती हैं, probable diagnosis में ancestor fruit collection, dense pelvic and peritubal या periovarian adhesions, hydrosalpinx मिल सकता है, teomasis, thick fibrous tubes, tube block मिल सकती है, dilated tortuous tubes मिल सकती है। अगर सभी एक्यूट स्टेज होगी तो उसमें कंजेशन, एडिमा, फ्लूइड फिल्ड पॉकेट्स, मिलियरी ट्यूबरकल्स, वाइट, येलो एंड ओपेक पैचेस ऑन यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज एंड पेरिटोनियम मिल सकती है। क्रोनिक स्टेजेस में अगर हम देखें तो स्मॉल swollen ट्यूब्स विद agglutinated fimbriae, there is nodular salpingitis, tubal block मिल सकती है, it can be a fimbrial block, it can be a mid tubal block or cornual block, bleeding of tubes, hydrosalpinx, pyosalpinx, caseous nodules in the uterovesical pouch, ये सब मिल सकता है। There are some specific signs that are seen in laparoscopy that is given by J.B. Sharma sir. These are Sharma's blue python sign, that is, there are alternate constrictions and dilatations of the fallopian tubes on injection of the methylene chloride, that is blue python sign. Then is Sharma's kissing fallopian tube sign, that is the fusion of the fimbrial ends due to the caseous material. Then is dried tree branch sign, that is calcified tubes, they appear like a dried tree branch. Then hanging gallbladder sign due to the perihepatic adhesions. Then parachute sign because of the adhesion of the ascending colon to the abdominal wall. Then there is Sharma's compartmentalization sign, that is multiple compartments are formed by the omental adhesions to contain the infection. There can be a Fitz or Curtis syndrome. Then we have CT scan. CT scan we can do in cases of masses in the abdomen and pelvis with ascites, thickened and enhanced peritoneum, with lesions in the abdominal viscera and lymph node. MRI में what we can find is unilateral or bilateral teomas मिल सकता है, hydrosalpinx, adnexal cysts और tuberculous deposits मिल सकते हैं on peritoneum or liver. Next is PET scan. PET scan में unilateral और bilateral tubo-ovarian masses with increased FDG uptake by the TB lesion. ये सब एडवाइस नहीं है कि आपको करना है, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मलेरिया से सस्पेक्टेड है, आपको क्लियर करना है क्या लीजन है, देन यू कैन गो फॉर CT, MRI और PET scan. Then endometrial aspirator sampling में कुछ other tests हैं that also we can send. That is, one is LAMP, that is loop mediated isothermal amplification. It is a technique for amplifying the DNA in a single tube. It is quicker, it is inexpensive with a sensitivity of less sensitivity of 40% in detection of FGTB. But the problem is it cannot diagnose drug resistance. LAMP features include it is isothermal, so it amplifies nucleic acid at a constant temperature. It is rapid. It can amplify a small number of copies of DNA with high sensitivity. It gives visual readouts, that is, it provides visual readouts that simplify the result interpretation. No thermal cycler, so it does not require expensive thermal cyclers, so that makes it more accessible. So it is unlike the conventional PCR that requires temperature cycling. Next is molecular line probe assays that is recommended by WHO for rapid diagnosis of multi-drug resistant TB, including FGTB on positive liquid culture, and it can detect drug sensitivity also. Its mechanism of action is it uses a pattern of bands to identify the drug resistance profile of an MTBC strain. Bands represent what the immobilized probes that bind to the MTBC amplicons. That line probe assays it can detect multiple gene mutations in anti-TB drugs. There are two types of line probe assays. These are first line and second line. First line detects mutations to rifampicin and isoniazid, while second line detects mutations to the fluoroquinolones and aminoglycosides. Its benefits are it's a rapid molecular test. It can be used to diagnose MTB and NDR-TB.
It is available at centralized laboratories. But the problem is its limitation is it is expensive. Then there is a composite reference standard, that is CRS. It is a combination of tests to increase the sensitivity and the detection rate of FGTB and to avoid the false positivity. It combines positive detection of acid-fast bacilli on microscopy or culture, positive gene expert, a positive epithelial granuloma that is found on histopathology of endometrial or peritoneal biopsy, and definitive findings of TB, that is like tubercles, gaseous nodules, or beaded tubes, or laparoscopy or hysteroscopy. Then PCR alone is not used for the diagnosis of FGTB. ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ. Then there are some newer molecular methods that can be used to diagnose FGTB. One is NSG, that is newer generation sequencing technology. This NGS technology, it sequences the entire genome of Mycobacterium TB. It provides the detailed information about the multiple gene regions or entire genome. It detects mutations that are associated with drug resistance. Its advantages are rapid and accurate diagnosis, identify the drug resistant strains, but its disadvantages are it is expensive, technically complex, it requires expert guidance for the interpretation of data, and requires technical skill and training. Next, we have nuclear receptors. There are three chief challenges with the diagnosis of FGTB. That is endometrium regeneration, uterine receptivity, and cytokine modulation. Nuclear receptors, they play a role in female reproduction and in sustaining sorry and in sustaining the viable pregnancies. So nuclear receptors can be used as a biomarker for the early detection of FGTB, especially latent FGTB, and as a therapeutic drug target, but they are still experimental. Next is index. What is the criteria for diagnosis of female genital TB? So, according to the Index TB Guidelines of India 2016, for the diagnosis of FGTB, any one of the following should be present. Either on the laparoscopy, there should be appearance that is typical for FGTB, that is, we should be able to see the tubercles, caseation, or beaded tubes. Any gynecological specimen that is positive for AFB on microscopy or gene expert, or positive for Mycobacterium TB on culture. Any gynecological specimen with findings that are consistent with FGTB on histopathological examination. क्या आप HPA examination करो इस पे आपको पॉजिटिव मिलेगा. या तो लेप्रोस्कोपी पे या फिर AFB जीन एक्सपर्ट या कल्चर पे, या फिर थर्ड इज हिस्टोपैथोलॉजी पॉजिटिव. So this is the female genital TB algorithm that is given by the Index TB Guidelines 2016. That how patient presents. So फिर हमें कैसे ATT start करना है, कब ATT start करना है, that you can read. Then for the TB notification, according to our Indian guidelines, India TB notification policy mandates that all the patients with TB, including FGTB, they are to be notified through NICSHARE, that is the TB notification portal. Patients of TB, that including the FGTB, they can also take benefit of government's NICSHARE Poshan Yojana, in which TB patients gets 500 rupees per month to buy food till patient continues treatment. What are the treatment aims? Treatment aim is to achieve TB cure, to prevent its long-term sequelae, and to restore the normal anatomy that may be distorted. So for the medical management, ड्रग सेंसिटिव टीबी ट्रीटमेंट एज पर एनटीईपी. देखिए कैटेगरीज जो पहले हम यूज करते थे दे आर नो लॉन्गर यूज्ड. इवन पेशेंट्स with irregular treatment or defaulters, they are treated with the above regimen in the case of drug sensitive TB, and treatment should preferably be given by the docs, that is the directly observed treatment of the short course with quality assured free medicines from the government doc center that is present all over the India under National TB Elimination Program, which was previously called Revised NTCP, that is Revised National TB Control Program. And treatment is given in two phases, that is the intensive phase and the continuation phase. In intensive phase, we have to give 2 HRZE and for 56 doses, and continuation phase we have to give 4 HRE of 112 doses.
Then drug sensitive TB treatment as per anti-EPA, that this is the dose that for isoniazid that is 5 milligram per kg, rifampicin 10 milligram per kg, which is like HRZDS 5, 10, 25, 15, 50. 5, 10, 25, 15, 50. What you have to remember is HRZDS 5, 10, 25, 15, 50. That is milligram per kg daily. If we talk about the side effects of ATT, then all ATT drugs can cause nausea, vomiting, fever, skin rash. Liver toxicity, a patient can complain of severe abdominal pain, vomiting, jaundice, especially in cases of isoniazid, more with isoniazid than rifampicin and pyrazinamide. Arthralgia with ethambutol, pyrazinamide, ocular toxicity with ethambutol, peripheral neuropathy with isoniazid. Drug-resistant TB. The factors that are associated with development of drug-resistant TB are people who do not complete a full course of DSTB treatment, they are inadequate or poorly administered TB treatment, HIV positive patients with active TB, they come from the area where the drug-resistant TB is common, a history of close contact with the drug-resistant TB cases. Such patients are high risk for developing the drug-resistant TB. And there are 5 categories of drug-resistant TB under the National TB Elimination Program. These are isoniazid-resistant TB, rifampicin-resistant TB, MDR-TB, pre-XDR-TB, and XDR, that is extensively drug-resistant TB. So this is how we have to manage the drug-resistant TB patients that you can read. Now, coming to the surgical treatment. Surgical treatment, it is best avoided in FGTB because there are more complications. And finally, main thing is we have to give the ATT. So only limited surgery in the form of, if abscess is there, then we can do surgery. Therefore, it is better to be avoided and give ATT directly. Diagnostic laparoscopy and hysteroscopy, if it is done at beginning to diagnose the disease, and later we can do after completion of full treatment of TB to prognosticate the patient कि patient की fertility की क्या chances and to plan further treatment for the infertility we can do. So for surgical treatment, if tubes are patent on laparoscopy, अगर हमें tubes patent लग रहे हैं laparoscopy पे, endometrium normal लग रहा है hysteroscopy पे, तो normal conception patient try कर सकते हैं या फिर हम ovulation induction कर सकते हैं. बट अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव है, तो एंडोमेट्रियम इज रिसेप्टिव बट ट्यूब्स ब्लॉक है, तो ट्यूब्स ब्लॉक है तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर IVF and embryo transfer that is performed with good outcome and conception rate around 25% में पेशेंट कंसीव कर जाती है. अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, एंडोमेट्रियम भी रिसेप्टिव नहीं है, मोर देन ग्रेड 3 एडेशंस है, तो जेस्टेशनल सैरोगेसी एडवाइस करना बेटर है. बट अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, एंडोमेट्रियम भी रिसेप्टिव नहीं है, ओवरी भी डैमेज हो गई है, then better is to go for adoption directly. Now, follow up कैसे करना है, long term complications क्या क्या हो सकते हैं FGTB के. So we have to assess the response to treatment at completion of 6 months of ATT by ultrasound pelvis. तो जैसे ही पेशेंट अपना 6 months की ATT कंप्लीट करेगी, हमें पेशेंट का अल्ट्रासाउंड पेल्विस करना है 6 months के बाद और देखना है कि कैसा रिस्पॉन्स रहा ट्रीटमेंट का. persistent TO masses अगर है, then they merit evaluation for drug resistance पर FNAC, तो हमें बायोप्सी लेके ड्रग रेजिस्टेंस चेक करनी है. fertility outcome is obviously very poor in FGTB cases. Infertility may be a permanent consequence of FGTB and it does not indicate the treatment failure or reinfection. तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपने ATT ट्रीटमेंट दे दिया तो पेशेंट पूरी तरीके से फर्टाइल हो जाएगी. नो, इट इज एक बार अगर कोई चीज डैमेज हो गई ना, उसको आप ठीक नहीं कर सकते. So infertility is like a permanent consequence of FGTB and it does not warrant repeated course of ATT. तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट कंसीव नहीं कर रही है आपको तो आपने एक बार ATT दे दिया, आपने फिर से ATT दे दी. नो, क्योंकि इट इज अ परमानेंट कंसिक्वेंस, आप पहले के जैसे वापस नहीं आ सकते. नेक्स्ट इज TB एंड प्रेगनेंसी. ड्रग सेंसिटिव TB, अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में उसको TB हो गया तो क्या करना. ड्रग सेंसिटिव TB है तो वी कैन गिव HRZE for 2 months followed by HRE for 4 months. Even in the first trimester of pregnancy we can give. Drug resistant TB है, then patient should not conceive while on reserve drugs. MTP is advised for MDR TB in first trimester as reserve drugs they can be teratogenic. If patient is refusing MTP कि नहीं मुझे MTP नहीं कराना है, इतनी मुश्किल से मैं कंसीव करी हूँ, then treatment is modified by excluding the injections. तो हम injections नहीं देंगे,
लाइक कैनामाइसिन, अमिकासिन, जेंटामाइसिन क्योंकि फीटोटॉक्सिक होते हैं. We have to avoid इथ्योनामाइड till 32 weeks and after counseling the patient कि ये प्रॉब्लम हो सकती है. Use of bedaquiline, though it is safe, but it is still debatable that whether we can use it in pregnancy or not. Now, coming to the take-home message, genital TB is emerging as an important cause of infertility. Diagnosis by bacteriological confirmation is ideal, but they are positive only in limited cases. Molecular diagnosis offers an effective alternative to conventional methods of bacteriological diagnosis. Treatment we can give by giving the 6 months of standard ATT. ATT is definitely safe in pregnancy and it must be given according to our new treatment guidelines of India, that is NT-TB, National TB Elimination Program. These are my references. Thank you.